Hi students, this is Vasudev Panda. Welcome to Master of English. Welcome to another class of CHSE Compulsory Arts, Science, Commerce. English non-detailed study. So today's chapter is Mystery of the Missing Cap by Manoj Des. Okay, and Manoj Das is one of the prominent, or you can say prolific bilingual writer. That means he writes in English and also he writes in Odia. Okay, he was, also professor of university. Okay, so as well as a writer, he was also a professor. So, and this story is about his experience when he was just a child and when he was just residing in the maternal uncle's house of himself. At that time, there was an incident. He has tried to narrate that incident here. तो पिले आज आमे आउरी गोटे सब्जेक्ट पढ़िबा चैप्टर पढ़िबा चैप्टर होछि तमरो CHSE इंग्लिश रो नॉन डिटेल स्टडी कंपलसरी इंग्लिश नॉन डिटेल स्टडी मिस्ट्री ऑफ द मिसिंग कैप मिस्ट्री कोले कोन कहले रहस्य गोटे हजी थिबा टोपीर रहस्य बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर तो पढ़िबा पिले हम जानिबा से टोपीटा केमती हजितला तार रहस्यटा कोन ता पछर थ्योरीटा कोन ठीक अछि जादू देखिबा भी हमको भल लागे ना सो थियरी इज आल्सो वन काइंड ऑफ कंजूरिंग इज देयर सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक. So it is certainly not my motive in recounting this episode of 2 decades ago to raise a laugh at the expense of Sri Maharana or Babu Bir Kishore. Maharana and Babu Bir Kishore. They are the two main character of this story. The story of main character किए Maharana, Mr. Maharana और Babu Bir Kishore. तो author कहते this is not my motive, मोर इच्छा नुह कौन to raise laugh तुम मान को हसैबा पाई कि कहा को क्रिटिसाइज करिबा पाई महाराणा और राजकिशोर बाबू बीर किशोर को कथा कहि कि मु कहा मनरे क्षोभ सृष्टि करिबा पाई चाहे नहीं कि कहा को इंसल्ट करिबा पाई चाहे नहीं से कहउचंती के कहउचंती द ऑथर इज टेलिंग. Okay, Babu Bir Kishore, then the Honorable Minister of Fisheries in Fine Arts, and you are the Honorable Minister of Fishery in Fine Arts. किए बाबू बीर किशोर थिले से समयर मंत्री कला मत्स्य और कला विभाग मंत्री. On the contrary, the twist is what the opposition side is विपरीत पार्श्वरे. I wish my friends and readers to share the sympathy. मु चाहूची मोर जो sympathy ता तांको प्रति अछि से sympathy ता share करिबा पई चाहूची. I have secretly nurtured in my heart for these two men over all these years. वर्ष वर्ष धरी मो हृदय रे जो sympathy थिला दया भावना थिला से मानक पई अनुकंपा भावना थिला मु सेटा मोर सांग मानक सहित मोर पाठक मानक सहित शेयर करिबा पई चाहूची. Okay, Sri Maharana was a well-to-do man. Who was a well-to-do man? Sri Maharana. Mr. Maharana was a well-to-do man. Well-to-do means wealthy. Wealthy man, rich man. Who was a rich man? Mr. Maharana. And he had the only pakka house in an area of 20 villages. 20 किलोमीटर आखपाखर 20 किलोमीटर भीतर तांकर एकमात्र पक्का घर थिला. White was on the eve of India achieving independence. ଆଉ ଭାରତ जो दिन स्वाधीनता पाइला ता पूर्व से घरटा को धड़ा चून मरा जाइतिला धड़ा व्हाइट दिसुतिला सेटा. The house shown as a sort of tourist attraction. The house shown as a sort of tourist attraction. सेटा आखपाख अंचल गोटे माने देखना जगह थिला देखला बड़ा जगह थिला. Okay, attraction for the folks of the nearby villages. They stopped and looked at it whenever they passed by. जेतेबेले से आखपाख अंचल को से एरिया देखि जानते से माने सेठी अटकंती एवं कोन करंती से माने सेठी अटकीकरी से घरटा को देखंती एवं जानते. For none could overlook the symbolism in this operation that had been carried out after nearly half a century. कारण दीर्घ 50 वर्ष धरी से घरटा ठिया आइछि आ से घरटा जो मान प्रकार ठिया आइछि ताको के ओवरलुक करके जाई पारंती नाही. Okay, next. Sri Maharana had a considerable reputation as a consensuous and generous man. Mr. Maharana had a considerable amount of reputation. तांकर गोटे भल महत्व थिला भल सम्मान थिला अंचल. Reputation कहले सम्मान, considerable कहले a fair amount of considerable amount of reputation. As a consensuous and generous man. Consensuous. What do you mean by consensuous? Consensuous means vivekavan. Viveka
born. And generous. Generous means kind. Generous means kind. जने विवेकी एवं दयालु हिसाब रे तांकर ना थिला. And he was an exemplary host with 2 points full of choice fish. तांकर उदाहरण दिया जाए जेते माछ पोखरी रो कथा पड़े exemplary figure तांकर ना उदाहरण exemplary कहले whose name is given as an example, taken as an example. 2 points full of choice fish, बच्चा बच्चा माछ, choice fish बच्चा बच्चा माछ चढ़ुथबो से लोको, and a number of well cared for cows, आ बच्चा बच्चा दुहालिया गाय भी तांकर थिला. He was a real villager. I will say he was a real villager. Who was a real villager? Mr. Maharana was a real villager. Came independence, स्वाधीनता आसिला. कौन आसिला पहले स्वाधीनता आसिला? Came independence. As is well known, the ancient land of India had 4 major castes from the time immemorial. जेमती आमे जानिचु भारत पूर्ण भारत पूर्व भारत भारतर परंपरा रे 4टी जाति थिले नहीं कि आमे जानिचु ना नहीं टाइम इमेमोरियल अनंत कालरू भारत रे 4टी जाति अछन्ते ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आउ शूद्र. But during the days immediately preceding independence, a new caste was emerging all over the country of patriots. But you know, after independence and during the independence war, at that time a new caste was being emerged. Nua gote caste सृष्टि होतला. कोन? The caste of patriots. देशभक्त मानकर गोटे जाति सृष्टि होतला. Immediately preceding independence, a new caste was emerging all over the country of patriots. The 15th of August 1947 gave a big boost to their growth. The 15th of August 1947 gave a big boost to their growth. तांकर से बढ़िवाटा को से जो ग्रोथ होतला से ग्रोथ को बिग बूस्ट किए देला 15th अगस्त 1947 भारत जो दिन स्वाधीन हला ता पर दिन ठारू सबु गां रे गंडा रे माने देशभक्त माने देखा गले. Okay, almost every village in almost every village beside the Brahmins, Kshatriya and Vaishya Shudra, a couple of patriots came into existence. Except Brahmana, Kshatriya, Vaishya and Shudra, in almost every village there were a couple of patriots. 2-4 जन देशभक्त रहले कहले आमे स्वाधीनता संग्रामी आमे स्वाधीनता पताका धरिकी हले थे आमे स्वाधीनता संग्रामी ए भले किछि आइला. It was observed that the small fisheries of Sri Maharana were often exercised in honor of these new people. And it was observed, people were observing that Mr. Maharana, what he was doing, Maharana were often the funds or fish funds of Mr. Maharana were often exercised in the honor of these new people. এই जो नुआ लोक माने बाहरले नुआ जातिटा सृष्टि हला देशभक्त मानकर जाति एमानकर सेवारे महाराणा बहुत तत्पर थिले. जेतेबेले माछ जदि मराला जालेले ताहले तांको पाखु से पठेइबे. And observers began to notice that Sri Maharana himself was first becoming a patriot. And observers also noticed with that he was also becoming patriot. Who? Mr. Maharana was, gradually he was becoming a patriot. से भी धीरे धीरे देशभक्त ही जाउतले. As I found out later, मु परे जानिबा को पाइली. Found out later, he had even lost the ambition to become a member of the state legislature. Ambition means M. लक्ष्य. तांकर एभली भी लक्ष्य था. मु परे जानिबा को पाइली जे से गोटे लक्ष्य रखिथिले से गोटे मन रे गोटे आकांक्षा थिला जे मु भी दिने विधानसभा को जीवी मु भी जणे एमएलए हेबी. कार लक्ष्य थिला? महाराणांकर. वेरी गुड. Okay, himself was becoming a patriot. As I found later, he had again lost the ambition to become a member of the state. The incident, now comes the main point. The incident I now relate occurred at the outset of his endeavor in that direction. And the incident, what I am going to tell you now, had happened at the outset of his endeavor. Outset means Ayamarambha. Endeavor means prachesta, approach. Endeavor gale approach. Outside of the endeavor. Okay. So এটা তাଙ୍କର जो प्रथम प्रचेष्टा थिला प्रयास थिला जे मु एमएलए हेबी से एमएलए होबार प्रयास रो प्रथम पदक्षेप प्रथम घटनाटा ए बळी थिला. Okay,
outside of his endeavor in that direction. I witnessed the incident as a small boy, and at the time I was a small boy. In my maternal uncle's house, which I frequently visited, being just near Sri Maharana. And because my maternal uncle's house was just beside Mr. Maharana's house, and I was there, I was staying there, and I frequently visited there. That's why I witnessed the matter. When I was there in my maternal uncle's house, मुझे से मामू घरे थी जो ये घटनाटा घटी आ मो मामा घरे थिला पीरियड से घटना देखी कारण मो मामू घरटा महाराणा बाबू घर पार्श्व रोला. Okay, when I narrate it, I do so naturally. When I narrate it, okay, I do so naturally with the understanding which has matured in me with time. And I'm just now narrating the story as far as I understand till now. ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିପାରୁଛି actually କ'ଣ ସବୁ ହଉଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାଟାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି. In those early days of Swadeshi ministry, से समय स्वदेशी माने जागरण मंच स्वदेशी आंदोलन सब होउथिला आ जो सेटा स्वदेशी जुग बोली कहा जाउथिला से समय जो माने मंत्री होउथिले से माने आ माने नो देयर वर नो डेप्यूटी और सब डेप्यूटी मिनिस्टर से बेले उपमुख्यमंत्री की आउ कोन सब डेप्यूटी मिनिस्टर एमती किसी नथिला कोन थिला all were full fledged honorable minister and all the minister all portfolio that means being a minister is full fledged minister jone log mantri mane se mantri and Babu Birkishore who held the portfolio of fisheries and fine arts portfolio means पदवी who had the portfolio of fisheries and fine arts तांकर पाखरे को पदवी थिला से मत्स्य और कला विभाग मंत्री थिले. Okay, portfolio of fisheries and fine arts held from our district and he belonged to our district से आमो district रो थिले held from our district. The sponsors of Sri Maharana thought is proper that his devotee into politics should have the blessing of Babu Birkishore. The sponsor of Mr. Maharana's thought was proper. Sponsor means प्रायोजित तांकर जो भावना जागृत होइतिला तांकर मन से ठीक थिला कारण से भाबुथिले कोन जे if I want to become an MLA then I must have the blessing of Babu Birkishore. Babu Birkishore को आशीर्वाद मते दरकार नहले मु MLA हेई परिबी नाही. Okay, in those days সেই দিন মানকরে in those days a minister's daily life was largely made up of speech making at public reception. সেই সময়ে মন্ত্রী মানকর নীতিদিনিয়া কাম কোন থিলা রে পিলে বড় বড় সভা সমিতিরে যাইকি ঘন্টা ঘন্টা ভাষণ দেবা बोरिंग भाषण देवा. A reception was arranged for Babu Birkishore with Sri Maharana as the chairman of the reception committee and a reception was arranged. गोटे अभ्यर्थना सभा arrange करा गला. And who became the chairman of the reception committee? Mr. Maharana became the chairman of the reception committee. Sri Maharana's huge ancestral cancer was laid with a line in cover. Mr. Maharana घरे पूर्व पुरुष रखिथिबा गोटे बेतर चेयर थिला ancestral cancer कहले पूर्व ancestral कहले पूर्व पुरुष cancer कहले बेतर चौकी गोटे बड़ चौकी थिला जहा ऊपर गोटे लाइन इन रो कवर काहे की दिया हला मंत्री बसिबे हां कि मंत्री गोटे छोट लोग से असला बसिबे open with the best village seamstress lady teller से गाँव सब बेस्ट seamstress lady teller जे थिला से कोन कोला a pair of heron with two big fish in their beaks से कोन कोला सुतारे दुईटा बड़ बड़ बग तयारी कला दुई पट एमती मुह करी आ से दुईटा बग तांकर थंटरे बिग कहले थंटरे गोटे गोटे माछ धरिथिले. And for the fortnight every day the children of the village lower primary school devoted the afternoon to the practice of the welcome song. And every day for a fortnight the children of the lower primary school of the village they devoted their time afternoon time in practicing the welcome song. से माने कोन करथिले से गां रे जो निम्न प्राथमिक विद्यालय थिला सिथरे छुआ माने सब दिन अपराह्न रे 15 दिन पई केवल स्वागत संगीत प्रैक्टिस करथिले. Welcome song among the many strange phenomena अद्भुत घटना
से जो अद्भुत घटना सब घटुला से मध्य एमंग द स्ट्रेंज फिनोमिना wrought by the great spirit of the time was the composition of the song for the composer. एंड से जो अद्भुत घटना सब घटुला जहाँ सब घटुला पारिपार्श्विक परिस्थिति जो परिवर्तन होता से भीतर गोटे अद्भुत घटना घटुला कौन कारण से अद्भुत घटना अद्भुत कहीं फॉर बिकॉज द कंपोजर हु वाज कंपोज द सॉन्ग गीतटा को जी लिखी थे द हेड पंडित ऑफ द स्कूल किए लिखी थे द हेड पंडित दैट मीन्स द हेड मास्टर ऑफ द स्कूल had lived 67 years without any poetic activities. से महाशय तांकर जीवन 67 वसंत व्यवहार माने अवहित हो जाइथिले मध्य केबे कविता लेखि नथिले से आजी कविता लेखुतिले का पई लेखुतिले मंत्री को पई आश्चर्य कथा द रिफ्रेन ऑफ द सॉन्ग रिफ्रेन कहले घोषा पद मुखड़ा रिफ्रेन नो मुखड़ा or घोषा पद you can say the refrain of the song still raises echoes in me still raises echoes कहले कौन रपिले ना echoes aludon or you can say प्रतिध्वनि echoes still raises वर्तमान पर्यंत से कथाटा से गीतटा मोर भितर प्रतिध्वनित होची still raises echoes in me okay so its literal translation would be literal means literal actuarico it will literally translate it will be like this oh my dear minister tell us हे महामहिम मंत्री कह आमको कह किए गीत यहाँ गीत हे महामहिम मंत्री हे शक्तिशाली मंत्री कुह आमको कुह डू टेल अस हाउ डू यू नॉट दिस लॉन्ग एंड ब्रॉड यूनिवर्स आपण ए विशाल विश्व को किभଳି परिचालित करचंती किभଳି पालन करचंती सते कि मिनिस्टर से तांको पैसा रो आनिक लोक को चलुचंती परिश्रम करके चलुचंती ए भले गोटे प्रशंसामूलक गीत लिखा हैतला The rest of the song catalogues the great changes nature and humanity experienced on the occasion of the minister's coming. And the rest of the song, बड़का जो बाकी जो पर्याय थिला गीतर सेठी कोन थिला the change that comes in the nature. पृथ्वी पृष्ठ जो परिवर्तन सब होइथिला मंत्री आगमन हेतु जहाँ सब प्राकृतिक परिवर्तन घटिथिला केमिति परिवर्तन हेतिला how the sun almost blushed in romantic happiness in the morning blushed कहले लाजेबा सूर्यर किरण मोली जाइथिला सूर्य लाज करूथिला मंत्री आसीबे बोली से दिन सकाळ जो सूर्य किरण थिला से भी रोमांटिक हैप्पीनेस रे ब्लश होई जाइथिला लाजी जाइथिला आउ कोन हितला पिले how each and every bird recited a particular raga each and every bird was reciting a particular raga प्रत्येक पक्षी गोटिए स्वर रे गोटिए लय रे गीत गाउथिले each and every bird recited a particular raga and with what eagerness केते आग्रहर सहित से गाँर स्त्री लोक माने okay and throbbing heart of the women folk waited to blow their consel शंख से गाँर महिला माने बहुत उद्वेगर सहित निजर हृदस्पंदन को नियंत्रण करी मंत्री आगमन शंख बजाइबा अपेक्षा करी रहिथिला केते एग्जाग्रेशन करा छे से माने राति सारा सो नथिले तांकर हृदस्पंदन बढ़ी जाइतिला से माने रोमांचित हो जाइतिले the village I know that nowadays minister do not enjoy such glory but I know that nowadays minister do not enjoy such glory but it was very different then से मु जाने वर्तमान मंत्री मान को से बड़ा कौन मर्यादा दिया जाओ ना किंतु सही समय रे अलगा थिला कथाटा अलगा थिला with the rustic children wrangled over several questions with the rustic children आमे जो गां गळी र पिला माने थिलु देसी पिला माने थिलु we wrangled over several questions wrangle means argue wrangle over several questions we are arguing over several questions आम भितर विभिन्न द्वंद्वमूलक प्रश्न द्वंद्वात्मक प्रश्न सब उठतला we are arguing what are the questions what are the minister मंत्री कोन कहते how does he think से कोन भावंती does he sleep or not से सुनती कि नहीं रे does he ever suffer from cold तांगर पेट के बताए
So such type of questions were there in our mind. ये भले प्रश्न सब आमने उनकी मारो थला किए कोदला ना बेसमती हुए ना किए कोदला ना रे सेमती हुए कारण से भी मनुष्य ये भले such type of question were being there. See, Maharana himself was hectically excited. Mr. Maharana, he was hectically excited, overexcited, both excited थे लेके Mr. Maharana. He used to sleep for a full hour in the afternoon. से नियमित भाव रे सब दिन अपराह्न रे गोटे घंटा सोउथले. But he gave up this habit at last 10 days prior to the reception. But he gave up that rest. Reception रो 10 दिन पूर्वरु से अभ्यासटा छाड़ी देले से सोई पारिले नहीं एते एक्साइटेड थिले जे से सोई पारिले नहीं reception. All his time passed in examining and re-examining details of the programs. All his time passed in examining and re-examining all the arrangements. चेहरा से लगे नहीं अरे टेंट वाला को कहिलो कि पॉलिथिन लगे नहीं साउंड सिस्टम कोन होला सो दिस इज व्हाट एग्जामिनिंग एंड चेहरा कोठी पड़िबो केते लोक खाइबे खाइबारे कोन कोन व्यवस्था सो दिस आर व्हाट एग्जामिनिंग एंड री एग्जामिनिंग yet he seems nervously uncertain तथापि yet कहले एठी तथापि he seemed nervously uncertain से नर्वस भी थिले अनसर्टेन भी थिले अनिश्चित भी थिले कोन हबो कोन नाही I hope you enjoyed the story. Okay, lots of things are there. Keep watching. Stay tuned till the next video. Bye bye.